जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं खुरम जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुरम जंजुआ ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने फेडरल बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, बुक 1 और बुक 2, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, उसके यूनिट्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उसके लेसन्स, क्वेश्चन आंसर्स, उनको एलेबोरेट करना। तो सो फार मैंने अभी तक सेकंड ईयर की जो फर्स्ट यूनिट है उस पर बात की है, और वो है सीरत तैयबा एंड द मुस्लिम यूथ। वो यू कैन वॉच इन द प्ले लिस्ट ऑन माई चैनल। तो उसमें यह है कि आप उसमें उसको जो समरी और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप यूनिट 1 के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा जो टास्क है वो ये है कि मैंने इंशाल्लाह सारे जो यूनिट्स हैं उन पे बात करनी है और आपके क्वेश्चन आंसर और समरी जो है उसको एलेबोरेट करूँगा। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि वो इससे अपने लेसन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। ठीक है जी। तो बच्चों, मेरा शुरू से यही एक स्लोगन रहा है कि मैंने आपकी कम्युनिकेशन पे काम करना है और आपको क्रिएटिव बनाना है। ठीक है। वैसे तो आपको पता है यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको नोट्स मिल जाते हैं, जनाब, सारे आपके यूनिट, समरी और क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके तमाम यूनिट्स के ऊपर जो लेसन का मैसेज है वो आप तक कन्वे करूँ और कुछ चीज़ें जो है आपके सामने लेके आऊँ, ताकि आप एक अच्छा आंसर दे सकें। और अच्छा आंसर वही स्टूडेंट देता है जो क्रिएटिव होता है। ठीक है। तो आप सुने, हर एक को सुने, मेरे अलावा भी जो लोग जिन्होंने ये काम किया है उनको भी सुने, लेकिन करें अपनी मर्ज़ी और लिखें अपना। ठीक है। क्योंकि यू हैव टू बी क्रिएटिव, और क्रिएटिविटी हमेशा इंसान को ऊपर लेके जाती है। ठीक है जी। तो मैं रट्टे और रॉट लर्निंग और क्रैमिंग को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता, और मेरा मैसेज यही है कि आप हमेशा आगे क्रिएटिविटी के साथ बढ़ें। सो आज हम बात कर रहे हैं जिन्नाह's विजन ऑफ पाकिस्तान यूनिट 2 सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड की जो है। It is a memorable and a famous speech that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ever delivered, talking to the first Constituent Assembly on August 11th, 1947. Remember one thing, that the Jinnah's vision is unprecedented. And you know that Muhammad Ali Jinnah was a great man, he was a great leader. And the person who is a great leader, whose vision will be great. So, in this speech, in the first Constituent Assembly, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah talked about the important functions of the newly born assembly, and he emphasized on the fact that the Muslim must work independently and without any pressure. And in his speech, he also talked about the revolution that ever took place in the subcontinent, and that was the unprecedented cyclonic revolution, and that was a very commendable efforts ever done by the Muslim of the subcontinent. And Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, as a leader, he made commendable and wonderful efforts. So that's why we got a separate land in the world. So in his speech, there are many factors that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah discussed. He's also discussed about the presence of the evils like jobbery, corruption, nepotism, and racism. These are the things which are very much harmful for the survival of the country, and we have to get rid of these evils, because if these evil exist in the country, so the country cannot run on the road of progress. Another important thing that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah discussed in his speech, and that was the importance of the partition, and emphasized on the unity, justice, and supremacy of law. Because without the supremacy of law, no nation can flourish. If your law is implemented properly, if the law enforcement agencies are
sincere and if they really take care of the belonging of the people, so no country will, can lag behind in the race of the progress. So Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah also told about that the many people opposed the idea of the partition because especially the Hindu, they were against that partition, and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, through his effort, through his commendable efforts, he made them realize that the partition was the only ultimate solution for the survival of the Pakistan, and without a partition no country can flourish properly, and that was very important factors on the part of the subcontinent, and that's why we got a separate land in the world. He also called it an unprecedented cyclonic revolution, because that revolution was matchless, because both Hindu and the Muslim, they had been living together for many years, but their ways of living and their religions and they were feelings and thoughts were separate. So Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's efforts are matchless, and that was a wonderful and commendable efforts he made for the independence of the country. So another important factor that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah discussed in his lesson, and that was the rights of minorities. So minorities are very respectful for us, because the white part of the flag shows the respect for and existence for the minorities, because that they are all in all to go to their religious places, and it is the responsibility of the government of the country to provide them protection, security, and every possible measures for their protections and for their healthy living. So Quaid-e-Azam emphasized on the fact that we should work with minorities irrespective of the differences based on color and creed, because the country's solidarity is entirely based on unity and uniformity and the equality, because no country can flourish if there is no equality and if there is no the proper balanced approach with reference to the nation as a nation, and we have to work very hard in this regard. So the speech is wonderful, and Quaid-e-Azam really gave the idea of a truly prosperous country. Okay, and this was the summary, and now we'll discuss the question answers. The first question is, what were the two main functions of the first Constituent Assembly of Pakistan as mentioned by Muhammad Ali Jinnah in his speech? The Constituent Assembly of Pakistan was set up in 1947 in order to frame a constitution of Pakistan, and it is a form of representative democracy. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, being the president of the Constituent Assembly of Pakistan, mentioned two main functions of the assembly. The first is the every onerous and responsible task of the framing the future Constituent of Pakistan. The second function of the Constituent Assembly is to act as a full and complete sovereign body. Quaid-e-Azam ने इनको एक complete sovereign body का कहा है कि उसने बनना है. As the federal legislature of Pakistan, he demanded them to do their best. तो Quaid-e-Azam ने उस चीज़ पे फोकस किया कि उन्हें अपना बेस्ट करना है in adopting and provisional constituent for the federal legislature of Pakistan. Okay, the second question is, what is the unprecedented cyclonic revolution which Quaid-e-Azam has talked about in his speech? Why did he call it as unprecedented? Quaid-e-Azam ने जो ये revolution, ये जो इनकलाब आया है, इसको Quaid-e-Azam ने जो है वो बेमिसाल क्यों कहा है, और ये क्यों एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, बहुत बड़ा इनकलाब था, तो इसके बारे में है. द इमर्जेंस ऑफ द टू dominance Pakistan and India on the world map is the unprecedented cyclonic revolution which the Quaid has talked about in his speech.
He said that the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominance in the subcontinent. Quaid-e-Azam called it unprecedented because of he has no parallel in the history of the world. क्योंकि ये जो पार्टीशन हुई थी, ये जो इनकलाब आया था बरसगीर के अंदर, पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बना, इसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पूरी दुनिया इसके गुण गाती है और ये जो इनकलाब था ये मैचलेस था, अनप्रेसिडेंटेड था। And he has no parallel in the history of the world, and this mighty subcontinent with all kind of inhabitant has been brought under a plan which is something gigantic and exemplary. Gigantic hota hai great, बहुत बड़ा. Now we'll go for the question number 3, and that is, how did Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah express his feeling about bribery, corruption, nepotism and jobbery? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah called bribery, corruption, nepotism and jobbery the biggest curses. नेपोटिज़म को हम कहते हैं अकरबा परवरी, और करप्शन आपको पता है कि करप्शन जो है एनीथिंग विच इज़ इलीगली डन, और ब्राइबरी आपको पता है कि रिश्वत है, और नेपोटिज़म में होता है कि जो आपके अकरबा हैं, जो आपके अजीज़ो अकारब हैं, उनको आप अपनी प्रेफरेंस देते हैं, और जब आप हाकिम वक्त होते हैं तो उनको आप अपनी गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं या उनको बहुत सारी जो मरात हैं वो उनसे नवाजते हैं। तो जॉबरी इज़ अनदर फॉर्म ऑफ करप्शन, द बिगेस्ट कर्सेस। ये बहुत बड़ी कर्सेस हैं, बहुत बड़ी वाइसेस हैं, बहुत बड़ी ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी माशरे को खोखला करती हैं। ही एडमिटेड दैट द कंडीशन ऑफ हिज पीपल इन दिस रिगार्ड इज़ द वर्स्ट। ही कॉल्ड ब्राइबरी एंड करप्शन ए पॉइजन। आपको आप देखें कि कायद-ए-आज़म ने जो बात पहली हमारी जो कानून साहब असम्बली है उसमें ये बात की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आज हम कायद के उस मैसेज को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। और आपको पता है कि हमारे तमाम डिपार्टमेंट के अंदर आलमोस्ट रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं हो रहा। हम दावा तो करते हैं कि हम एक फेयर स्टेट चला रहे हैं, लेकिन ये सारी बुराइयां स्टिल एग्जिस्ट कर रही हैं और हमें इसके ऊपर देखना चाहिए। ही कॉल्ड ब्राइबरी एंड करप्शन ए पॉइजन है, ये खोखला करती हैं, ये रिश्वत सतानी और ये जो करप्शन ये किसी भी मुल्क की बुनियादों को खोखला करती हैं। ही सेड दैट इट इज़ ए लेगेसी दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस। लेगेसी होती है एक पूरी जो आपकी इनहेरिटेंस चलती आ रही है, जिससे आप गुजर के आए हैं। अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स गुड एंड बैड हैज़ अराइव्ड ग्रेट ईवल्स and the evil of nepotism and jobbery. He hopes that the Constituent Assembly will take adequate measures to put that down with an iron hand as soon as it is possible to do so. He himself seemed strict when he said that whenever he would find such a practice in vogue. In vogue mean के in order, यानी in vogue कोई भी चीज़ जो फैशन में हो, जो आम हो, in vogue, or in continuing anywhere low or high, he would certainly not countenance it. Okay, go for the fourth question. What were Muhammad Ali Jinnah's views about the partition of India? Describe in few lines. मोहम्मद अली जिन्ना की जो व्यूज़ हैं कायद-ए-आज़म के, वो पार्टीशन के बारे में क्या हैं और उनको डिस्क्राइब करना है। मोहम्मद अली जिन्ना सेड फर्मली दैट partition had to take place as there was no other option in the country. कोई दूसरा हमारे पास रास्ता नहीं था। कायद कहते हैं कि पार्टीशन ज़रूरी थी, where one community is in majority and the other is in minority, but Quaid-e-Azam felt that on both sides in Hindustan and Pakistan, and there were sections of the people who might not agree with it and not like it, but in his judgment there was no other solution, and time will prove by actual experience that the division was the only possible solution of India's constitutional problem, and the future history would record its
verdict in favor of it. He further said that any idea of a united India could never have worked, and in his judgment it would lead to a terrific disasters. कि अगर ये partition ना होती तो बहुत बड़ा disaster जो है वो हो सकता था. Like the next question is, what in the eyes of Qaid was the biggest hindrance होती है रुकावट in the way of the India to attain freedom of the foreign corruption. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in fact stressed upon the joint and collective efforts of all the members of the assembly to concentrate solely on the well-being of the people and especially of the masses कहते हैं अब आवाम को and the poor. If all the members work in cooperation, अगर तमाम लोग इकट्ठा काम करें forgetting the past, माजी को भुला के, burying the hatched होता है दुश्मनियों को भुला के, they were bound to succeed, वो यकीनन कामयाब होंगे. And if they start working in that spirit, all the angularities of the majorities and the minorities community, तो तमाम जो भी इनके जो एंगुलरिटीज़ हैं, इनके जो तजाज़ात हैं, इनके जो क्लैशेस हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे. एंड मुस्लिम देर वर पठान पंजाब, शिया सुन्नी एंड सो ऑन. एंड अमंग हिंदूज़ देर वर बर्मन भी हैं, ये हिंदुओं की कास्ट हैं, बर्मन, विश्वनाथ्स एंड खातरीज़, बंगालीज़, मद्रासीज़ एंड सो ऑन विल वैनिश, वो ख़त्म हो जाएंगे indeed. And this land had the biggest hindrance in the way of the India to attain the freedom. और ये बहुत बड़ी रुकावटें हैं कि अगर हम इन नस्ली फसादात में पड़े रहेंगे तो हम कभी भी अपने मुल्क को एक अच्छा मुल्क नहीं बना पाएंगे. And independent, otherwise there would have been free people long ago. और अगर ये चीज़ें ना होती तो हम बहुत अरसा पहले फ्री हो जाते, आज़ाद हो जाते. And these differences of the majority and minority were the only reason that the nation of 400 million people was held in subjections for such a long time. Describe, next question number 6, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's view about the minorities as expressed in his address in the first Constituent Assembly. कि Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ने minorities जो हमारी अक़लियतें हैं उनकी किस तरह एड्रेस किया है कि वो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं असम्बली के उन्होंने बताया. टॉकिंग अबाउट द मिनॉरिटीज़, कायद-ए-आज़म सेड दैट नो मैटर्स व्हाट कलर, कास्ट और क्रीड कहते हैं अकीदे को, कि कोई भी उनका कलर है, कोई भी उनका अकीदा है, ही इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट ए सिटीज़न्स ऑफ द स्टेट, कि वो पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, वो स्टेट के सिटीज़न्स हैं विद इक्वल राइट्स. तो एक जैसे राइट्स हैं, प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशंस हैं उनके, इवन एज रिगार्ड द मुस्लिम. एंड देयर आर मैनी डिफरेंट नेशंस लाइक पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी, ये हमारे जो सेक्ट्स हैं, एंड सो ऑन. एंड अमंग द हिंदूज़ एंड देयर वर बर्मन, विश्वनाथ, खातरीज़, बंगालीज़, मद्रासीज़, ये हिंदुओं की जो कॉस्ट हैं. एंड दीज आर नो नीड ऑफ द और वॉज टू कम टुगेदर, इनको इकट्ठा होना है फॉर कॉमन कॉज, एक ही जो मकसद है उसके लिए, एंड दैट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, और वो मुल्क की तरक्की है एज ए होल. ओके, एंड ही डिक्लेयर्ड वंडरफुली, यू आर फ्री to go. And Qaid-e-Azam emphasized on the word you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque, on to any other places of worship on the state of Pakistan. You must belong to any religion, you may belong to any religion or a creed or any sect that has nothing to do with the honors of the states. यानी आप किसी भी अकीदे से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आप सबको आज़ादी है कि आप अपने मंदिरों में, अपनी मस्जिदों में, अपने गिरजाघरों में जा सकते हैं. और ये एक अजीम लीडर की निशानी होती है कि वो इस तरह की सोच रखे. What kind of freedom did Muhammad Ali Jinnah envision for the
पीपल ऑफ पाकिस्तान इन जनरल। किस किस्म की आज़ादी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका विजन किया कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए ज़रूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना एनविजन सच फ्रीडम, ऐसी आज़ादी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन जनरल विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ द पुअर मैसेस, जो कि गरीब आवाम की तादरसी करे। इन पार्टिकुलर ही सेड दैट एवरी सिटीज़न नो मैटर what his caste, color and creed in first, second or last citizen of the state with equal rights। ये जो इक्वालिटी की बात कायद आज़म ने बार बार की है, यहाँ से उनकी ग्रेटनेस का पता चलता है कि ऐसा लीडर जो सबको एक ही पैराए पे लेके आना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में बँट चुका है और लोग मुल्क का सोचने की बजाय अपने बैंक बैलेंस को और अपनी ज़ाती मराद को भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरी सैड अलास कि हम कायद आज़म के इस मिशन को नहीं पा सके। He openly declared that all citizens are free to practice their respective religions because of their religions, faith, caste and creed has nothing to do with the business of the state. Okay, then question number 8 is, what did Muhammad Ali Jinnah mean by Hindu would cease to be Hindu and the Muslim would cease to be Muslim? This is very important question और इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया है कि किस तरह कि हिंदू को हिंदू से हटाने का हम सोच भी नहीं सकते, उनके रिलीजन्स को ख़त्म करने का और उनको अपने रिलीजन में लेके आने का, और मुसलमानों को किसी को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी के रिलीजन के किसी भी मज़हब के बारे में कोई इंटरप्शन कर सके। In this statement, Qaid Azam expresses his vision and political ideology of the Pakistan according to which there will be no discrimination of the majority community and the minority community। कोई discrimination नहीं है and कोई भी तजाद नहीं है, and they are all equal citizen of one state। Hindu would cease to be Hindu and the Muslim would cease to be Muslim, not in the religion sense because of religion is the personal faith of each individual। कि एक मज़हब किसी भी बंदे का मज़हब जो है वो उसका एक पर्सनल राइट है एंड हैज़ नथिंग टू डू विद द बिज़नेस ऑफ द स्टेट, और रियासत का इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी का रिलीजन जो है वो इख्तियार कर सकता है। एंड इट इज़ जस्ट इन द पॉलिटिकल सेंस दैट दे आर फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट सिटीज़न ऑफ द स्टेट। Okay, next ninth question is, after reading this important speech as Qaid Azam, what do you think was his vision of Pakistan? It was Jinnah's vision that Pakistan would emerge a sovereign democratic state where the law would reign supreme and politicians would work with honesty and dedication and put down bribery, corruption, jobbery, nepotism with an iron hands। All the people, irrespective of their color, caste and creed, would enjoy equal rights and privilege, and they will be free to practice their own religion and faith, and they, being the citizen of the state, would work for the peace, progress and solidarity of the country। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखा होगा आपने कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आंसर्स वो ओवरलैप करते हैं, यानी कि वो स्टेटमेंट जो है बहुत सारे क्वेश्चंस की आंसर्स की वो सेम है। तो इसमें आप जो है वो ईज़िली किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरे क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। The last question is, then read the last paragraph of this and state as the what were the guiding principles of the Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Also elaborate the significance of the principles. The guiding principle of Qaid Azam were the principles of justice and fair play without any prejudice। prejudice कहते हैं किसी भी तज़ाद, किसी भी नस्ली जो इख्तलाफात हैं, और इल विल जो उनके आपस में क्लैशेस हैं। ही सेड दैट हिज गाइडिंग प्रिंसिपल वुड बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी इन रनिंग द अफेयर ऑफ द स्टेट। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है कि विदाउट एनी डिफरेंस, ये नहीं कि मुसलमान के लिए अलहदा जो कानून हो और गोरों के लिए अलहदा, हिंदुओं के लिए अलहदा, ईसाइयों के लिए अलहदा, एक कानून, इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो दैट वाज द स्लोगन।
and the principle, and these are the principles on the basis of which he could look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. And these principles are very significant as they can be thought of as rules that ensures social justice, and these principles determines the way in which various types of the justice are carried out. It is the right, the principle, it is the right of the citizen to be treated fairly, and all the government institutions should operate according to fair rules. Well, dear students, I have discussed in detail the question answers. Hopefully you will utilize these questions and answers in your for the preparation of your exam, और मुझे उम्मीद है कि आप क्रिएटिविटी को फॉलो करेंगे और राइट योर ओन आंसर्स. ठीक है, मैंने आपके लिए ये एलेबोरेट किए हैं जो आंसर्स हैं, लेकिन कोशिश करें कि ख़ुद लिखें, क्योंकि सेल्फ डन इज़ वेल डन. और हमेशा से मेरा यही स्लोगन रहा है और मेरा यही मिशन है कि मैं आपको क्रिएटिव बनाऊं और आप एक अच्छे और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को फॉलो कर सकें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी नेक्स्ट जो यूनिट्स की जो वीडियोस हैं वो अगर आप विदाउट एनी इंटरप्शंस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल खुरम जंजुआ ऑफिशियल, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.